Hello everyone, my name is Utkarshi Chauhan and in this video we are going to discuss my second internal test solution, and these all are the questions that we will discuss in this video. So let's begin with the first one. So first question is, what are the stages of text mining, and consider the example of complaint and suggest the approach algorithm process to identify applicable IPC BNS section to recommend applicable BNS broad section national category section of IPC Indian Penal Code section and theft of my mobile phone by an unknown person at MG Road on 20 February 2023 and all. And so first we understand what is text mining. So text mining involves extracting useful and structured information from the unstructured text data, and text mining is the subfield of the data mining, and these are the steps that involves in text mining. So first step is problem definition. So definition, the goal in this case, the objective is to categorize the complaint into appropriate IPC section. And text preprocessing, tokenization. In the tokenization, split the text into the words or phrases. For example, theft of mobile phone, we separate all the words, theft of my mobile phone. And stop words removal, we remove the irrelevant words and unuseful words like the, of, at, in, etc. For example, theft mobile phone. And stemming lemmatization, normalize words to their base form like stolen to steal, running to run, and walking to walk, like that. And then named entity recognition. In the named entity recognition, we identify entities such as a date, location names. So MG Road is a location and this is a date. And then feature extraction, convert the text into numerical representations. For analysis, wake of words and term frequency in word document frequency. And then word embeddings like word to wake or word for semantic understanding. And in the fourth step, text analysis and categorization. Classification. In the classification, we use machine learning or rule-based algorithm to map text to categories, IPC section, and we use the algorithms like knife-based, SVM, decision tree, or advanced models like BERT. And the clustering. We cluster groups and similar complaints to final patterns. And algorithm we use K-means or DB scan. And in the fifth one, post processing and recommendation, interpret result and suggest the appropriate IPC section of broad national categories BNS, and applying text mining to the complaint example. So this is the complaint we see in the screen. Theft of my mobile phone by an unknown person at MG Road on, and so on. And so first step is text pre-processing. In the text pre-processing, first we tokenization the words. So it is split into the words or phrases like that: theft of my mobile phone by unknown person, MG Road, stolen, and so on. And then stop words removal. In this irrelevant words removes theft, mobile phone, unknown person, MG Road. And you can see that irrelevant words like you, no, of, at, in, there is no type of words like that. And NER entities, date, this is the date, and MG Road is a location, and mobile phone is object stolen, and black jacket scarf on his face is a description. And the second step, feature extraction, generate word embeddings using models like TF-IDF or BERT for deeper semantic analysis. And in the third step, analysis and categorization based on the extract features, keywords like a theft, mobile phone stolen, and mapped IPC section is a section 378 for a theft and section 379 for a punishment for theft. In the
Step 4, map to broad national categories BNS. Use the IPC categories to identify the BNS section. For example, BNS category for a property crime and algorithm tools for implementation pre-processing. In pre-processing, we use a Python libraries like NLTK or CY and NER. In classification, we pretend models like BERT or robot app or mapping IPC to BNS rule-based system or custom trained ML model. And what's the final recommendation? So the complaint maps to IPC section 378 and 379 under the BNS category of property crime. And let's move to the second question. So second question is a give algorithm Python code snippet at a suitable place for the following task. So first one is data preprocessing, and the data preprocessing we import the necessary libraries like NLTK, stop words, word tokenize, and word net limitizer. And then we use the example of complaint in the text is equals to theft of my mobile phone by unknown person at MG Road on 20 February 2023. And in the tokenization, tokens is equals to word tokenizer text lower. It split the text into words or phrases. And in the stop word removal, we use the filter token is equals to word for word in tokens if word not in stop words. Uh, it removes the unrelevant words in of it like that. And then lemmatization. Lemmatizer is equals to word net lematizer, and processed text is equals to lemmatizer, lemmatized token, for token and filter tokens. And in that मतलब कि उनके ओरिजिनल फॉर्म में ले आएगा like running to run and stolen to steal like that. And in the print process text, what's the output is that theft mobile phone unknown person MG Road and 20 February 2023. And in the next one, in the classification, we import the library and we use the example data. And in the text, theft of my mobile phone, robbery at store and assault case, and we label to them theft, robbery and assault. And इन दी फीचर एक्सट्रैक्शन वेक्टराइज इज इक्वल टू काउंट वेक्टराइज, हम हर एक वर्ड्स को नंबर में दे देंगे क्योंकि कंप्यूटर तो समझ नहीं पाता है इसलिए. सो वी यूज दिस वेक्टराइज काउंट वेक्टराइज x is equals to vectorize dot fit transform text. And then we train the test split x train x test y test and is equals to train test split x label test size is equals to 0.2 and random 42. And the classification model multinomial NB, this is for the naive base हम यूज करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए. And model fit x trend y trend, and this print the model accuracy model dot score x test and y test. And then in the clustering we import the necessary libraries. एंड देन हमने एक टैक्स लिया है जो अलग अलग पार्ट्स में है लाइक दैट. टैक्स इज इक्वल्स टू थेफ्ट ऑफ मोबाइल फोन, रॉबरी एट स्टोर, थेफ्ट ऑफ ज्वेलरी, असॉल्ट. ये अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड हो गया है. और जो टीएफ आईडीएफ फीचर एक्सट्रैक्शन में हमने क्या किया, वेक्टराइजर इज इक्वल्स टू टीएफ वेक्टराइजर एक्स इज इक्वल्स टू वेक्टराइज डॉट फिट ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट. जो टीएफ आईडीएफ रहता है वो क्या करता है कि जो इन सब में से जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है लाइक रोबरी है और असोल्ट है उन्हें इम्पोर्टेंस नंबर दे देगा, और जो कम है ऑफ एट उन्हें कम नंबर देगा. और फिर हम क्या करेंगे कि हम के मीन क्लस्टरिंग अप्लाई करेंगे. के मीन्स इज इक्वल्स टू के मीन्स एन क्लस्टर टू रैंडम स्टेट 42. एंड देन k means of fit x, and then we assign the cluster assignments, print cluster labels k means labels. And move to the another one. हमने import करी है important libraries.
एंड देन हमने एग्जांपल में डेटा सेट जो लिया है हमने लोड करा है इरिस डेटा सेट, जो कि एक फेमस डेटा सेट है। एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू डेटा डॉट डेटा एंड डेटा डॉट टारगेट। और हमने डेटा को ट्रेनिंग और टेस्ट में मतलब कि बांट दिया है, लाइक एक्स ट्रेन और जो वाई ट्रेन है वो मतलब ये है कि 80% डेटा मॉडल को सिखाने के लिए है, और जो एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट है वो 20% डेटा को चेक करने के लिए है। और जो टेस्ट साइज 0.2 का मतलब ये है कि पूरा जो डेटा का 20% टेस्टिंग के लिए रखा गया है हमने। एंड देन डिसीजन ट्री मॉडल, एंड जो डिसीजन ट्री क्लासिफायर रहता है वो मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम होता है। देन हमने मॉडल को ट्रेन किया है, मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, एंड देन प्रिंट मॉडल एक्यूरेसी मॉडल डॉट स्क्वायर एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट। एंड लेट्स मूव टू द अनदर वन, एसोसिएशन रूल माइनिंग। हमने एसोसिएशन रूल माइनिंग में इंपोर्ट करी है लाइब्रेरीज, और हमने एक मतलब कि ट्रांजैक्शन डेटा लिया है। इसका मतलब ये है कि वन मतलब है ट्रांजैक्शन डेटा लिया है, और वन मतलब है कि किसी ने कुछ चीजें खरीदी है, और जीरो मतलब है कि किसी ने कुछ नहीं खरीदा है। और जो फ्रिक्वेंट आइटम सेट्स है हमने इसमें ऐसा किया है कि बार बार जो खरीदी वाली मतलब खरीदे जाने वाली चीजें हैं उसको पता लगाने के लिए हमने फ्रिक्वेंट आइटम सेट करा है। और जो एप्रोप्रियर एल्गोरिदम रहती है मतलब कि जो जो बार बार खरीदे चीजें जाने वाली चीजें हैं उसको फाइंड करता है एप्रोप्रियर एल्गोरिदम। देन फ्रिक्वेंट आइटम सेट इज इक्वल्स टू एप्रोप्रियर डेटा मिनिमम सपोर्ट इज इक्वल्स टू 0.5 यूज call names and true, and rules is equals to association rules frequent items and metric lift mean threshold 1.0 and prints the rule। एंड मिनिमम सपोर्ट का मतलब यह है कि जो चीजें कम से कम 50% ट्रांजेक्शन में है वो है उसमें वही चुनी जाएगी, उससे ज्यादा नहीं चुनी जाएगी। और लेट्स मूव टू दी अनदर वन, give an algorithm Python code snippet for linear classification model least square principle for fitting a best lead linear curve in scatter plot। So first we import the necessary libraries, import numpy as np, and import matplot pyplot as plt, and from sklearn linear model import linear regression। देन हमने फर्स्ट क्या किया है, हमने डेटा रेडी किया है, एक्स इज इक्वल टू एन पे एरे 1 2 3 4 रीशेप -1 एंड 1। एक्स ये इनपुट डेटा है मतलब कि फीचर्स है, यहाँ पे जो एक्स है इज इक्वल टू 1 2 3 4, यहाँ जो है एक कॉलम में रखा गया है, ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट होंगे। और जो y है ये एक आउटपुट डेटा है, टारगेट है, y इज इक्वल टू 2 4 5 4 5, ये y एक्सिस पर पॉइंट होंगे। एंड देन लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाना है और हमें सिखाना है, तो हमने यूज किया है मॉडल इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन एंड मॉडल फिट एक्स वाई। सो जो लीनियर रिग्रेशन है ये एक मतलब कि स्ट्रेट लाइन बनाने वाले के लिए एल्गोरिदम है, जो कि डेटा पॉइंट्स के बीच सबसे अच्छी फिटिंग ढूंढता है, लाइक है ना। और जो फिट एक्स वाई, यहाँ जो मॉडल को यह सिखाया गया है कि एक्स वाई और वाई के बीच में क्या मतलब कि रिलेशन है। ये हमें जानने के लिए, यह सीखने के बाद हम मॉडल एक्स के लिए आउटपुट वाई का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि वो क्या होगा। और हमें क्या करना है कि प्रिडिक्शन के लिए किया है वाई डेप्रिड इज इक्वल्स टू मॉडल प्रिडिक्ट एक्स। ये जो मॉडल है प्रिडिक्शन के लिए हमने यूज किया। देन फॉर विजुअलाइजेशन पीएलटी स्केटर एक्स वाई कलर ब्लू लेबल, एक्चुअल डेटा जो स्केटर होता है वो एक ब्लू डॉट बनाता है, और जो पीएलटी प्लॉट एक्स वाई प्रिडिक्ट कलर रेड लेबल इज इक्वल टू बेस्ट फिट लाइन पीएलटी legend and with this PLT show like that। And this is the solution of internal second paper।
Thank you for watching my video.